अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में सेकेंडरी स्कूल टीचर और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी एसएसटी और एचएसटी की पोस्ट जो हासिल करना चाहता है और अब तक टेस्ट की तैयारी नहीं की है तो वो सब लोग इस वीडियो को लाजमी देखें। एमसीक्यू नंबर 1 इज पाकिस्तानी स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ लेक्चर 2 है आज, और जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। Question 1 is name the first Pakistani bank which started its operation on August 17, 1947. पाकिस्तान के पहले बैंक का नाम जिसने 17 अगस्त को अपना काम शुरू किया। ऑप्शन ए मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी हबीब बैंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड बैंक एंड ऑप्शन डी अलाइड बैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हबीब बैंक। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज When the first agriculture reforms were introduced in Pakistan, पाकिस्तान में पहली ज़रई इस्लाहात कब मुतारिफ हुई? ऑप्शन ए जनवरी 24, 1960। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं या गवर्नमेंट जॉब टीचिंग्स जॉब लेना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको वो सारी मालूमात गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स की सब अपडेट और इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है और टेस्ट की मुकम्मल तैयारी भी करवाई जाएगी और उसके बाद का प्रोसेस भी बताया जाएगा। तो वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके और आप टेस्ट को पास भी कर सकें। ऑप्शन बी जनवरी 24, 1958। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 24 जनवरी 1959 एंड द डी ऑप्शन इज 24 जनवरी 1957। The next MCQ is the first canal water agreement was made with India on। भारत के साथ पहला कैनाल वाटर यानी नहरों के पानी का मुआहिदा कब किया गया? ऑप्शन ए May 4, 1950, ऑप्शन बी May 4, 1951, ऑप्शन सी May 4, 1948। The right answer is option C। The next MCQ is when first census was conducted in Pakistan। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई? ऑप्शन ए 1951 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कौन था? FM खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज नेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था? Option A Justice Sardar Abdul Rashid is the right answer. The next MCQ is if you are finding value in today's content, don't forget to give it a thumbs up. When the first constitution of Pakistan was announced, पाकिस्तान का पहला आइन कब अनाउंस हुआ था? Option A 14 August 1956, Option B 25th December 1956, Option C March 23rd 1956, Option D none of them। The right answer is Option C 23rd March 1956 को पाकिस्तान का पहला कानून आइन अनाउंस हुआ था। The next MCQ is when for the rehabilitation of refugees emergency was declared for the first time in the history of Pakistan। पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी कब नाफिज की गई थी मुहाजिरीन की बहाली के लिए? ऑप्शन ए 25 November 1948, ऑप्शन बी July 25, 1948, ऑप्शन सी August 27, 1948। The right answer is option C। The next MCQ is the first Gazette of Pakistan was issued on August 15, 1947। पहली जो पाकिस्तान की पहली गज़ेट 15 अगस्त को जारी की गई किस काम के लिए? फॉर अनाउंसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी के ऐलान के लिए। ऑप्शन बी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने के लिए। ऑप्शन सी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन डी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ रिहेबिलिटेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। द नेक्स्ट MCQ इज Who was the first foreign minister of Pakistan? पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा कौन था? ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी चौधरी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी अब्दुल रब निश्तर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज जफरुल्लाह खान was the first foreign minister of Pakistan. The next MCQ is Who was the first commander in chief of army after independence? आज़ादी के बाद पहला कमांडर इन चीफ आर्मी का कौन था? ऑप्शन ए
Jan Frank Mezery is the right answer. The next MCQ is who was the first Muslim commander-in-chief of army? पाकिस्तान की फिजाइया का पहला मुसलमान सरबराह कौन था? ऑप्शन ए जैन एम मूसा खान, ऑप्शन बी जैन इरशाद बुस्की, ऑप्शन सी जनरल मोहम्मद अय्यूब खान. The right answer is option C. The next option is General Muhammad Ishtiyaq Khan, but the right answer is option C, General Muhammad Ayyub Khan. The next MCQ is who was the first Muslim chief of army of Air Force of Pakistan? Option A, Air Marshal Asghar Khan is the right answer. The next MCQ is who was the first chief minister of Punjab from August 1947 to November 1948? पाकिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर पंजाब का कौन था? 1947 अगस्त से लेकर 1948 नवंबर तक. The right answer is Iftikhar Hussain Mahmood. The next MCQ is name the Chief Minister of Sindh from August 1947 to April 1948. Chief Minister of Sindh कौन था? अगस्त से लेकर अप्रैल तक 1947 अगस्त से 1948 अप्रैल तक चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन था? तो ऑप्शन ए निसार खुर्रो, ऑप्शन बी अयूब खुर्रो, ऑप्शन सी रहीम टालपुर, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद टालपुर. द राइट आंसर इज अयूब खुर्रो, ऑप्शन बी. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? ऑप्शन ए खान अब्दुल कय्यूम खान, ऑप्शन बी डॉक्टर खान साहिब इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज who was the first chief minister of Balochistan from May 1972 to February 1973? Option A Abdullah Murray, option B Sardar Ataullah Mengal, option C Akbar Bukti, option D Sardar Akhtar Mengal. The right answer is option B. The next MCQ is name the first governor of Punjab from August 1947 to 1949. The right answer is option D, Sir Francis Modi. The next MCQ is name the first governor of Sindh from August to October 1947 to 1948 तक. पाकिस्तान में सिंध का फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध कौन था? ऑप्शन ए गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट MCQ is name the first governor of KPK from August 1947 to April 1948 तक. गवर्नर ऑफ KPK कौन था? फर्स्ट. The right answer is option D, Sir George Cunningham. The next MCQ is first martial law was imposed in. पहला martial law कब नाफिज किया गया? Option A, the right answer, October 1958. The next MCQ is Karachi nuclear power plant. The first nuclear power plant of Pakistan was established in. पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर कराची में है. कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे कहते हैं और वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? वी हैव टू गिव द सन. द राइट आंसर इज सन 1972. ऑप्शन सी. द नेक्स्ट MCQ इज नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. का पहला प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन बी सिकंदर मिर्जा इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट MCQ इज हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन कौन था? ऑप्शन A. Fazal Mahmood, option B. Wazir Ali, option C. Hafiz Kardar is the right answer. The next MCQ is who was the first governor of State Bank of Pakistan? State Bank of Pakistan का पहला गवर्नर कौन था? Option C. Zahid Hussain is the right answer. The next MCQ is the first Pakistani postal stamp was issued in. पाकिस्तान की पहली postal stamp कब issue हुई? We have to give sun here also. The right answer is option D, July 1948. The next MCQ is after independence the first radio station was established in. आज़ादी के बाद जो पहला रेडियो स्टेशन established हुआ कहाँ पर हुआ? The right answer is Karachi, option B. The next MCQ is which of the following was the private airline licensed in April 1993 to operate? वो कौन सी एयरलाइन थी जिसको चलाने लाइसेंस दिया गया था? ऑप्शन ए एयर ब्लू, ऑप्शन बी हजवेरी एयरलाइन, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हजवेरी एयरलाइन. द नेक्स्ट MCQ इज
Which was the first public airline of Pakistan? की पहली public airline कौन सी थी? Option A is the right answer, Orient Airline. Thank you for watching. Like, share and subscribe and hit the bell icon so you will never miss any video of this educational journey.